Assalamu alaikum, dear students. I'm Muhammad Riaz Khan with another discussion on interviewing candidates. अभी तक हम HR के different aspect को cover कर चुके हैं, in which the very first part was HR planning and job analysis. उसके बाद recruitment and selection का process हमने start किया. उसमें हमने पर्सनल प्लान्स और जॉब एनालिसिस की बात की. उसके बाद we have been to the recruitment process, and after that we have discussed the testing, employee testing as well. Now we are here to discuss that how we shall interview those who have been scrutinized through the rest of the steps before the interviews. So उनको कैसे इंटरव्यू करना है. वो लोग जो कि थ्रू रिक्रूटमेंट वर अट्रैक्टेड टू अप्लाई, उसके बाद स्क्रूटनाइज हुए, टेस्टिंग उनकी हुई, एंड देन गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज. सो हाउ दोज कैंडिडेट शैल बी interviewed then. So what we'll be talking about in these discussions, the very first thing we'll be starting with ki selection interview is which sort of interview. आम इंटरव्यू से या different types of interviews से किस तरह different. What are the errors we used to commit during conduct of interview, and we'll also be looking from an interviewee prospect as well. And then we'll be discussing that how we can design and conduct a structured situational interview, and how that who is a good and effective interviewer, what are his her ability. इसी तरह एक अच्छा interviewee कैसे होता है, so we'll be discussing that as well. So basically, if we go through the time of interviews, so we come to know that there are selection interview, there are appraisal interview, and there are exit interviews. So what are these? ये होते क्या हैं? और हमारा जो particular point, जो interview we are going to discuss in these series of lectures, वो क्या है? So appraisal interview, a discussion following a performance appraisal in which supervisor and employee discuss the employee ratings and possible remedial action. जब performance appraisal हो जाती है, then जिस supervisor ने जिस employee की performance appraisal initiate की थी, उसके साथ उसकी मीटिंग होती है, and they are discussing what is the performance of that employee, and is there something wrong with it? Are there some areas which can be improved? If there are some areas, are there some concern of the organization or the HR department or of the supervisor? Okay. So the supervisor in this discussing कि जी ये अप्राइजल इंटरव्यू है, ये आपके एरियाज है जहां पे वी हैव कंसर्न दैट यू हैव टू इम्प्रूव. जी सो उसको कैसे इम्प्रूव करना है. द सुपरवाइजर यूज्ड टू टेल दैट specific remedial actions. कि जी यहाँ पे you have low performance, we need that you shall improve it. So how? उस how के लिए फिर वो उसे possible remedial action बताता है. Exit interview वो होता है when there is a voluntary turnover of a person जो कि जा रहा है एक organization छोड़ के. So HR department एक interview conduct करता है उनसे to know about that why he is leaving. Because this person, the reason of leaving of this organization, and then uski insight kya hai towards different things, what is his her perspective, views and thoughts about different issues. So exit interview is purpose ke liye kiya jata hai कि although this person is leaving us, so एक तो ये है कि उसको एक कंसिडर किया जाए कि उसके जो जाना है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, उसके प्रॉपर तरीके से और उसकी जो
इंफॉर्मेशन है उससे वो ले ले, ताकि उसे ये भी हो कि माय वर्ड्स मीन समथिंग, माय से इज इम्पोर्टेंट वन। सो उससे एग्जिट इंटरव्यू के तौर पे इंटरव्यू कराया जाता है, दैट इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस टू नो अबाउट was there an issue faced by that person who is leaving the organization, or we are more interested in that person views and thoughts about different issues. And the third, which are will be the key to this whole discussion, that is selection interview, which is part of the recruitment and selection process, particularly the selection process, typically conducted on site at the hiring company. The purpose of selection interview is to determine whether a candidate will be selected for the position or he or she is interviewing for. So इसमें से selection के जो आखिरी stages हैं उसमें से ये conduct कराया जाता है. It can be one, it can be a number of interviews, but the main aim is कि जो shortlisted हैं, scrutinized candidates हैं, उसमें से best possible available person को offer करें हम job. So selection interview structure, ठीक है जी, कैसे होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. एक तो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर होता है, कंटेंट है, एंड देन हाउ टू कंडक्ट इट, द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू. सो विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन कि जी इंटरव्यूज का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, व्हाट शैल बी देयर इन इंटरव्यूज डिपेंडिंग अपॉन द जॉब वी आर गोइंग टू इंटरव्यू द कैंडिडेट्स फॉर दैट, और देन हाउ टू कंडक्ट दोज इंटरव्यू. डिजाइन एंड कंडक्ट जो है, डिजाइन इज इन कंटेंट एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है. सो सिलेक्शन इंटरव्यू के फॉर्मेट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, या आप तीन भी कह सकते हैं, बट primarily it is the structured one or a directive interview. When we have written down the job related areas or themes ahead of time and possibly predetermined answer for appropriateness and scoring. It depends कि कितना structured है. कि हमने सिर्फ main job duties लिखी, which again came from the job description and job specification thing, and it is स्पेसिफिकली पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, पॉसिबल आंसर भी लिखे हुए हैं. सो अगर पॉसिबल आंसर भी लिखे हुए हैं तो वो टिक मार्किंग होगी एंड दैट इज मोर स्ट्रक्चर्ड वन. लेकिन अगर पॉसिबल आंसर नहीं लिखे हुए देन वी कैन टेक नोट ऑफ दैट. और फिर मजीद अगर इसमें से स्ट्रक्चर ये है तो हम सिर्फ कहते हैं कि जो एरियाज ऑफ जॉब अंडर कंसिडरेशन है वो लिखे हुए हैं, और उसके बाद we have to ask. So that is semi-structured interview. Unstructured or non-directive interviews have no set format. Okay, may have a few questions in advance, but most selection interview fall in this category. And we selection, the discussion start with an introduction and is go on and go on. But as a HR person, we did not recommend the fully unstructured or non-directive interview. There shall be some sort of structure, and specifically the job related themes, areas, concerns, and those shall be structured one. There may be, so it shall be a little bit unstructured, that is semi-structured one. So for example, here is some of the officer program applicant interview form, where there is a list, name of the applicant, it may be printed as well. Overall impression, compare this applicant, others you have interviewed, and now note score 4 through 7 constitute a recommendation for selection. So यहाँ पे वो देखते हैं कि जी not recommended है, क्यों not recommended, why do you think so? Recommended है, performance of duties measure an applicant ability to manage and get things done. उसको जो relevant जो job related questions है उनसे उसके मुताबिक पूछते हैं. Then we write down this is the rating and these are the comments. So this is what the most structured one. इसी तरह उसके आगे communication skills, and then we can think कि जी अब कितने लोगों ने ये किया है, तो उनके
किए हुए इंटरव्यूज में से हम फिर उनकी जो एवरेज है दैट वी हैव टू टेक आउट। लीडरशिप स्किल्स उसी में कंटिन्यूटी है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज। सो इन these application interview applicant interview form we have many areas कि वो start होता है किस डेट को हुआ, किसका हो रहा है, ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है। बट द ओवरऑल इम्प्रेशन जो है ये बाद में कंसिडर से पहले जो पोर्शंस है, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, इसके मुतालिक क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस अगर उसने कोई एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं और जो कि इस जॉब से मिलते जुलते ड्यूटीज के लिए, सो देट आर गोइंग टू बी आस्क्ड। देन कम्युनिकेशन स्किल क्या है, प्राइमरीली वी आर मार्किंग दैट पर्सन जी, और मार्किंग के बाद जो है हम उसको मजीद देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स एटसेट्रा वगैरह। लीडरशिप स्किल measures an applicant ability to support, develop. There are so many other section as well जो कि कुछ हमने skip कर दिए। So these were sort of interview form जहाँ पे we have to write down the numbering or the marking and then collect it. But what sort of question we shall ask? या जैसे आप कह लें कि टाइप ऑफ इंटरव्यूज कैसे होते हैं। सो इफ वी स्टार्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन वी स्टार्ट विद द स्किल बेस्ड, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब रिलेटेड जो जॉब की मेन एक्टिविटीज हैं वो कैसे होंगी। स्किल बेस्ड क्वेश्चन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपीरियंस द कैंडिडेट हैज विद द टूल्स, टेक्निक्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। Skill based question help you find the difference between theoretical knowledge and practical knowledge। कि जो बुकिश नॉलेज है जो इस बंदे ने पढ़ा हुआ है and he has been practicing it or not, he has applied this or not। So this sort of questions are skill based, but it is not only about the knowledge of the skill, rather the usage and application of that skills and the tools, techniques। So theoretically it has been we have dig into the knowledge comes from the researching a task, watching closely how a process works। Theoretical knowledge is useful but it isn't applied knowledge। So हमें वो थोड़ा बहुत तो चाहिए कि बंदे को पता हो कि how this tool, technique or standard works, but actually how it is implemented। For example, Isman, have you ever been involved in this? Explain how this works। Have you ever done any public speaking thing? So this is public speaking is now what we can say it's a skill, and we are asking about that first. The second one comes the behavioral questions, the behavioral content. Behavioral questions for candidate aptitude in approach to a task based on past experiences। Behavioral questions are useful for revealing soft skills। जो skill based थे वो हम particularly hard skills के बारे में पूछते हैं या observable स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं जो कि टूल्स, टेक्निक से रिलेटेड हो। जबकि बिहेवियरल ये है जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन, ट्रस्टवर्दीनेस हम उस बंदे का पता करते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल उसका क्या है, लॉयल्टी एंड वर्क एथिक्स के बारे में इसका क्या हो गया। सो फॉर एग्जांपल वी आर आस्किंग टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू सेट डिफिकल्ट गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड व्हाई यू डू दैट। So we can relate it that this person have a self-determination perspective or goal-setting perspective। Have you handled conflict with the project management team in past? Here we are looking for the conflict management approaches of the person। Okay, how you have been in conflict, what was the reason, how you manage it, how do you resolve it। Describe a time when you took initiative to solve a problem। Here we are going to take into the person's creative and innovative thoughts, or and again with this problem solution behaviors। So यहाँ पे हम वो work related behavior की बात करते हैं, workplace behavior की बात करते हैं, with peers, with colleague, with boss and subordinate। And the third is situational questions। Situational interview question are hypothetically they give
the candidate is given a scenario and that you are in that office and you are in that situation, what you will be what will be your strategy, how you will deal that situations. So that's what we get. How would you deal with the dissatisfied? For example, we are looking for a manager sales. So there is a dissatisfied customer or client. So how you are going to deal that? How would you prioritize two pressing deadlines? दो deadlines approach कर रही है, which one you are going to uh, give priority and why? What would you do if a team member took credit for your project? अब यहाँ पे थोड़ा सा उनके it may have a behavioral aspect as well, लेकिन उस behavior को एक situation में डाल के कि जी आपने एक काम किया, you have done a brilliant job, जी, but then some of your teammate take the credit for that. So what will be your thought on that कि जी आपको क्या करना है? आप उसका जो है, you have to tell the people कि जी look, it's not this person work, it's me, and I'm going to I was the person who have performed it. Or you are just saying it's okay, it's not my cup of tea, it's okay, it's not on none of my business. The response to situation questions allow you to get a sneak peek into candidate instinct, confidence and decision making ability. इसी तरह similar ये है कि आपने current COVID, for example in today COVID-19 की situation में कोई product launch करना है, and you are asking that person okay, working from home, for example, you are deciding, your HR department is deciding that uh, we have to allow some people to work from home, but who that will be, what job we can, for which job we can, which jobs we can allow our employee to work from home during the COVID-19 thing. So that is how we are putting someone in other shoes and then asking that person, they feel your responsibility, feel that situation, imagine that situation and put yourself in the other shoes and then respond in a way. So here we are digging into that person, critical and analytical thinking, analogies, and his problem solving skills. So that was about the nature of questions. So उसके हवाले से तीन तरह के parts of the interviews आपके लिए are types of interview, जिसमें से behavioral aspect देख ला, skill based हमने देख लिया, या जो है वो situational देख ली. But what's is the format in terms of participants are the environment related. So there are five kinds of interview formats. The very first one is a tele-video call interviews, and in today's word specifically. A tele-video interview can reveal person's presence of mind, responsiveness, and communication skills of a candidate. एक तो, if it is a Skype, it is a Zoom based, or it is any other MS Team, Google Meet, etc., etc., whatever platform we are using for that interview. So एक तो उस बंदे का उसके साथ जो familiarity है वो चेक करनी है. उस दौरान how he is interacting while the person is not in front of him in physically, rather he or she or they are connected with this person through ICTs. It's faster and takes less effort because you are not going you are not to arrange office, where not arrange something like other will applicant will be waiting for their turn. Rather it's an online easy है. इंटरव्यूवी के लिए भी ये है कि उसने कहीं नहीं जाना, उसने अपने एट ईज रहना है. So so you can skim out the weaker candidates early in the hiring process. ये इसके किए जाते हैं कि अब अगर we are going for interviewing 200 people, so rather we shall have a scrutinizing interview or preliminary interview, a tele or video call interview, so we can eliminate 100 candidates. So we then go for the rest of the 100.
It can be held and over long distances where there are issues of commuting. Just a person is coming for hundred of kilometers for just to have an interview. What are the negatives? One cannot judge the body language of the candidate. Maybe through cam we can see that person. हाँ हम देख सकते हैं कि ये बंदा जो है कैसे उसके body gestures क्या हैं, but we cannot have that facial expression और जो physically देखने में जो assessment है वो नहीं कर पा. Connectivity and network issue may occur because of the ICT connectivity issues. So वहाँ पे हम कुछ चीजें miss कर सकते हैं. A candidate may not perceive it's crucial as face-to-face interview because यहाँ पे environment जो है वो control में नहीं है. It's a sort of open space interview जहाँ पे interviewee at his ease, his own ease है और जो interviewer है they are at their own ease. So जो proper connection है वो नहीं बन पाता. Then comes the assessment interviews. उसके pros क्या है? Evaluate talent on multiple skill sets. जहाँ पे skills पे हमारा ज़्यादा focus होता है. Teamwork and individual skills are ideal for large group and freshers. Its uniqueness towards candidate out of their set routine. The assessment interviews होते हैं वो mostly एंट्री लेवल जॉब्स के लिए होते हैं या लार्ज ग्रुप्स को हैंडल करने के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन शुरू करवाई जा सकती है, टीम वर्क दिया जा सकता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू एज वेल. इसमें का पर्पस ये होता है कि वी आर गोइंग टू असेस सम सेट ऑफ स्किल्स अमंग द कैंडिडेट्स. इसके negatives क्या है? Take more time in planning because you are going to develop the scenario, you are going to prepare the situation there, prepare the environment there, and you may have to bring some tools there और वो सारी चीजें. may miss the best talent in mass screening. When we are going through this mass screening और हमने 8-10 लोगों के एक साथ इंटरव्यू करने, so may we miss one person जिसको हम properly assess नहीं कर पा रहे due to our selective perception, due to the selective interaction with that person. Candidates may already know the interview process details. उन्हें ये भी पता है कि हाँ जी होता क्या आ रहा है, so they are informed participants or informed answers उनके पास होंगे. So it's a sort of, these are the negatives of face-to-face interviews. Pros क्या हैं? Thoroughly test candidates. When there is face-to-face और उसमें भी usually ये होता है कि one-on-one interviews हैं. You have the variety of questions. Yeah, you can read the facial expression, the voice tone, the pitch, and all those. Thoroughly test a candidate, gauge body language and confidence. तो ये बहुत डिटेल में डिग आउट करते हैं इंटरव्यू को, इंटरव्यूवी के स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, ऑक्यूपेशनल स्किल्स एटसेट्रा. Interviewer may get biased if it is one-on-one. कि जी सो स्टेरियोटिपिकल थिंग्स जो हैं वो जो जजमेंटल एरर्स हो सकते हैं, दूसरे को जज करते हैं. सो वी आर गोइंग प्रायर गोइंग टू इंटरव्यूज वी मे हैव सम सेट्स माइंडसेट्स और जिसके साथ इशू आ जाता है सो वी कैन be biased towards that person. It's time and resource consuming one-on-one. It's take a lot of time because if we are interviewing 100+ people, so if we are giving 10 minutes, so that means 10 into 100 means 1,000 minutes. 1,000 minutes is difficult to manage. Assessment criteria can vary with different interviewers. अब जाहिर सी बात है कि तमाम को फिर एक बंदा इंटरव्यू नहीं कर सकेगा, सो उसके लिए हमें डिफरेंट इंटरव्यूअर्स बैठाने होंगे. जो इंटरव्यूअर रिलायबिलिटी जो कि हमने बात की थी, इंटरेटर की बात की थी, वो फिर वैरी कर जाती है. सो हियर वी नीड समहाउ structured interview format. Group interviews, fast and effective for assessing large groups, task, competitor spirit, and teamwork, can be conducted by less qualified recruiters too. 3-4 बंदों का ग्रुप बैठा हुआ है और इट्स ग्रुप टू ग्रुप इंटरव्यू एक्चुअली, और ग्रुप टू पैनल इंटरव्यू होता है. सो वहाँ पे
लार्ज ग्रुप्स को असेस करने के लिए होता है, और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट या ये भी है वन बाय वन वी आर आस्किंग, or we are presenting one of the scenario to all of the 3 or 4 or 5 candidates and then asking one by one. इसका और असेसमेंट में डिफरेंस ये है कि वहां पे हम मल्टीपल सेट स्किल्स और टीम वर्क और इंडिविजुअल स्किल्स पे करना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है वो लार्ज ग्रुप्स में से देखते हैं कि किस बंदे का जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरे से कितना डिफरेंट है। फेवर्स स्पीड और एक्यूरेसी इन आंसर्स, क्योंकि यहाँ पे हम अक्सर पोस्ट करते हैं क्वेश्चन टुवर्ड्स द 5 or 4 people and ask whoever have a knowledge of it shall come forward. So यहाँ पे accuracy जो है वो फिर थोड़ी सी suppress हो जाती है, and in terms of this speed race जो है उसकी वजह से फिर answer accuracy issue आ सकते हैं। The best candidate may get missed out because of this speed thing, कि जिस बंदे ने ज्यादा तेजी दिखाई और उसने आंसर दे दिया और आंसर में नॉट बी गुड वन बट वी आर लुकिंग, सो दैट्स we may get into trouble as an interviewer, जिसकी वजह से जो बेस्ट कैंडिडेट है वो हमसे इधर उधर हो सकते हैं। And then comes the interview panel, one to panel interview जिसे हम कहते हैं। Assessment by multiple recruiter at the same time at the same location of the same candidate. So उसमें से फिर उनके जो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी है, अब एक दूसरे के साथ एग्रीनेस है, वो इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती, बिकॉज सेम सिचुएशन है, सेम एप्लीकेंट है, क्वेश्चंस भी हो रही हैं, एंड each interviewer can evaluate on a set parameter or they can be mixed as well, और हर बंदे ने अपने अपनी रेटिंग करनी है, either on the skills base, एक बंदे ने situational question करनी है, एक ने psychological assessment करनी है, एक ने skills देखने हैं, communication skills देखने हैं। It can be like that, it can be the other way around, इसके हर बंदे की अपनी full length है और उसने अपने साथ जो हमने forms discuss किए थे उस तरह के forms, and they have those forms with them and they are asking the questions. Candidate feels more valued because questions जो हैं वो आते हैं, there are 3, 4, 5 expert people are there on the panel and they are asking and they are doing this interview thing. इसके negatives क्या है? High involvement in resource consuming because you will be asking the experts and the managers to come to take interviews. So it is consuming a lot of resources, can be too overwhelming for a candidate and put him on guard. क्योंकि जब एक इंटरव्यूवी उसको ले लेता है, so वो defensive भी हो सकता है, because there are certain time there are cross questioning as well. So cross question में the person may be defensive one, जो interviewee है उसको, panel can reach a disagreement. That's what is one of the major issue with that, कि जो inter-rater agreement है वो कम हो जाती है, एक दूसरे के साथ जो liability है. So maybe the recruiter one is, or the interviewer one is assess the person very outstanding, the next good one, and the third average one. So how to have an average of these such varied results of a person. So these were about something about the interviewing of the candidates, that what an interview means, how what type of questions are being asked from the interviewees, और उनसे फिर जो किस तरह की कंडक्ट किस तरह करवाए जा सकते हैं. So in the next lecture we will be discussing कि how to conduct an effective one. यहाँ पर हमने टाइप्स बता दी कि जी दिस टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं, क्वेश्चन वाइज भी, फॉर्मेट वाइज भी, अब उनको कंडक्ट कैसे कराएंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग. थैंक यू.